Hello student. In last video we saw 8 questions which are related to product and division. Okay. Now in this video also we have to take some questions which are related to product form or division form formula. Okay. So see the question number 9, d by dx e raised to x, x minus 1 upon x plus 1. Okay. Now in this question, see, this is numerator, this is denominator. In numerator, terms are in product form. That means we have to apply product formula also. Okay. So in this question, we have to apply division formula as well as product formula. So whenever we have to apply product formula and division formula, so first apply division formula. So this is numerator and this is denominator. तो जब भी प्रोडक्ट फॉर्म में और डिवीज़न में फॉर्मूला लगाना हो, दोनों फॉर्मूला लग रहे हैं उस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले डिवीज़न फॉर्मूला लगाना, उसके बाद ही प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाना. ठीक है. सो d by dx e raised to x, x minus 1 upon x plus 1. So this is numerator and this is denominator. So apply the formula. Denominator differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator upon denominator whole square. Denominator whole square. Now see beta, differentiation of e raised to x into x minus 1. They are in product form. So take e raised to x as first function, x minus 1 as second function. ठीक है. तो हमने क्या लगाया बेटा इसमें फॉर्मूला, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर. x plus 1 as it is. Now apply product rule. So e raised to x is first function, x minus 1 as second function. First function differentiation of second function plus second function differentiation of first function. इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया. पहले हमने क्या लगाया, डिवाइड रूल. अब हम इसमें क्या लगा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल. माइनस ई रेस टू एक्स, एक्स माइनस 1. अब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कितना होगा, 1. और डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0. तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x plus 1 whole square as it is. Now x plus 1 e raised to x as it is. Differentiation of x 1 minus differentiation of 1 0 plus x minus 1 as it is. Differentiation of e raised to x, e raised to x minus e raised to x, x minus 1. 1 plus 0 1. इतना ही आया. Upon x plus 1 whole square. Clear? So differential of x is 1, differential of 1 is 0, e raised to x, differential of e raised to x, e raised to x. So we can take e raised to x as common from these two terms. We can take all, but take only e raised to x as common from these two terms. So e raised to x inside x plus 1. Okay. E raised to x, x plus 1. Now we have big bracket, this is 1 plus x minus 1. 1 plus x minus 1. Took e raised to x as common. Minus e raised to x, x minus 1 upon x plus 1 whole square. Now 1 1 cancel.
So we have e raised to x, x plus 1 into x, only x, minus e raised to x, x minus 1 upon x plus 1 whole square. Now again we can take e raised to x as common, big bracket. So x into x plus 1 minus x minus 1 upon x plus 1 होल स्क्वायर. कॉमन लिया सिर्फ ई रेज टू एक्स. अब x का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. अब माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर. एक्स एक्स कैंसल. सो डिफरेंशिएशन इज e raised to x, x square plus 1 upon x plus 1 whole square. So differentiation of e raised to x, x minus 1 upon x plus 1 is e raised to x, x square plus 1 upon x plus 1 whole square. Clear? So this is question number 9. ठीक? तो सबसे पहले डिवाइड रूल लगाना और उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगाना. ओके? और फिर उसके बाद कॉमन अगर निकलता है टर्म से तो कॉमन निकाल लेना. ठीक है? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10. सो क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. d by dx e raised to x plus sin x upon 1 plus log x. Again there is numerator and denominator. Okay, so apply the formula. d by dx e raised to x plus sin x upon 1 plus log x. This is numerator and this is denominator. Formula is denominator differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator 1 plus log x, 1 plus log x upon denominator whole square. Clear? Now 1 plus log x as it is. Differentiation of e raised to x, differentiation of e raised to x is e raised to x plus differentiation of sin x, differentiation of sin x cos x minus e raised to x plus sin x. Now differentiation of 1 0 plus differentiation of log x 1 upon x upon 1 plus log x whole square. Clear? So 0 plus 1 upon x, 1 upon x. So the answer is 1 plus log x e raised to x plus cos x minus e raised to x plus sin x upon x whole upon 1 plus log x whole square. Clear? So differentiation of e raised to x plus sin x upon 1 plus log x is 1 plus log x e raised to x plus cos x minus e raised to x plus sin x upon x whole upon 1 plus log x whole square. Clear? So this is question number 10. Now we will see question number 11. Okay? So what is question number 11? d by dx log x
upon 1 plus x log x. Okay, so this is numerator and this is denominator, but in denominator how many terms we have given? 2 terms. In 2 terms, one term is in, 2 terms are in product form. See, x log x, x log x, that means we have to apply product rule. Okay, so first apply divide rule and then apply product rule in x log x. d by dx log x upon 1 plus x log x. Now this is numerator and this is denominator. Apply the formula. Denominator differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator, differentiation of denominator upon denominator whole square. Clear? फॉर्मूला लगाएं, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का, फिर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होल स्क्वायर. अब सबका डिफरेंशिएशन जानते हैं, देख लेते हैं. इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 कितना होता है बेटा? 0. लेकिन हम इसका कर सकते हैं क्या? नहीं. तो इसमें हम क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल. क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल. सो पहले ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स माइनस लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स. तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन अपॉन 1 प्लस एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर. क्लियर? तो ये हो गया 1 प्लस एक्स लॉग एक्स होल अपॉन एक्स, ये आ गया बेटा, माइनस लॉग एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0. और इसमें क्या लगाएंगे हम? प्रोडक्ट रूल. प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन 1 प्लस एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर. ठीक है, तो इसमें हमने क्या लगाया? प्रोडक्ट रूल. ठीक, तभी हमारे पास क्या आ गया? 1 प्लस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स एज इट इज माइनस log x, inside 0, leave it, x, differentiation of log x, x into 1 upon x, differentiation of log x is 1 by x, plus log x and differentiation of x is 1, differentiation of x is 1 upon 1 plus x log x whole square. Now this x and the x cancel. So 1 plus x log x upon x minus log x in bracket 1 plus log x upon 1 plus x log x whole square. क्लियर? तो क्या करना था? सबसे पहले डिवाइड रूल लगाया और डिवाइड रूल लगाने के बाद यहाँ x log x आया, उसमें क्या लगाया हमने? प्रोडक्ट रूल. ये प्रोडक्ट रूल लगाया और उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया. तो इस टाइप से आ गया आंसर. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12, सी. d by dx e raised to x minus e raised to minus a e raised to x plus e raised to minus a. Okay, now see beta, there are numerator and
denominator. That means we have to apply divide rule. Solution. And in this we have given e raised to x and e raised to minus a. Now we know the differentiation of e raised to x. Now see beta, e is constant, a is also constant. We saw differentiation of a square, a is constant, 2 is constant, 0, constant value, differentiation of constant is 0. So in this question, e raised to minus a is constant because there is no variable, okay, in base or power, clear? So e raised to minus a is constant, and we know that differentiation of constant is 0. So apply divide rule. So divide rule, denominator, this is denominator, differentiation of numerator, minus numerator, differentiation of denominator upon denominator whole square. Okay, so e raised to x plus e raised to minus a as it is, differentiation of e raised to x minus differentiation of e raised to minus a, minus e raised to x minus e raised to minus a as it is, differentiation of e raised to x plus differentiation of e raised to minus a upon e raised to x plus e raised to minus a whole square. Clear? Now e raised to x plus e raised to minus a, differentiation of e raised to x minus differentiation of e raised to minus a 0 minus e raised to x minus e raised to minus a as it is, differentiation of e raised to x and differentiation of e raised to minus a 0 upon e raised to x plus e raised to minus a whole square. ठीक है, कुछ नहीं बेटा, डिफरेंशिएशन किए हैं, e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेस टू एक्स होता है और e रेस टू माइनस ए का डिफरेंशिएशन 0 होता है. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया देख लीजिए, e रेस टू एक्स, यह है e रेस टू एक्स, इन ब्रैकेट e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस ए, ये लिखा हमने. फिर यहाँ क्या है, माइनस e रेस टू एक्स प्लस 0 मीन्स e रेस टू एक्स. फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, e रेस टू एक्स माइनस e रेस टू माइनस ए अपॉन e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस ए होल स्क्वायर. क्लियर? नाउ वी कैन टेक e रेस टू एक्स एज कॉमन, e रेस टू एक्स एज कॉमन. सो इनसाइड e रेस टू एक्स प्लस e रेस टू माइनस ए माइनस e रेस टू एक्स e raised to minus a upon e raised to x plus e raised to minus a whole square. Now e raised to x plus e raised to minus a, multiply by minus sign, minus plus minus and minus minus plus, e raised to x cancel. Okay, so e raised to x into e raised to minus a plus e raised to minus a 2 e raised to minus a upon e raised to x plus e raised to minus a whole square. So the answer is 2. Base is same, powers are added. 2 e raised to x minus a upon e raised to x plus e raised to minus a whole square. ठीक है, तो बेटा इस क्वेश्चन में याद रखिए e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेस टू एक्स होता है और e रेस टू माइनस ए का डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि e भी कांस्टेंट है
और a भी कांस्टेंट। क्या लगाया हमने? डिवाइड रूल। डिवाइड रूल लगाने के बाद e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेस टू एक्स, e रेस टू माइनस a का डिफरेंशिएशन 0, e रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन e रेस टू एक्स, e रेस टू माइनस a का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बचा? e रेस टू एक्स ये बचेगा और e रेस टू एक्स ये बचेगा। बीच में क्या है? माइनस। फिर e रेस टू एक्स क्या ले लिया हमने? कॉमन। फिर यहाँ आएगा माइनस और ब्रैकेट लगाया। फिर माइनस के अंदर क्या किया हमने? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आया? माइनस ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस ए। ई रेस टू एक्स से ई रेस टू एक्स कैंसल, ये आया। ई रेस टू माइनस ए प्लस ई रेस टू माइनस ए, टू ई रेस टू माइनस ए, और किसका मल्टीप्लिकेशन है? ई रेस टू एक्स का। बेस इज सेम, पावर्स आर एट 8, तो ई रेस टू क्या आ जाएगा? एक्स माइनस ए। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। So question number 30 is, if y is equal to x upon x plus 4, then prove that x dy by dx is equal to y into 1 minus y. So what we have given? Y is equal to x upon x plus 4, and what we have to prove? That x dy by dx is equal to y 1 minus y. See beta, we have to prove y into 1 minus y. So in rough, we know the value of y. Y is x upon x plus 4, we have given. So in rough, find also 1 minus y. So 1 minus y means x upon x plus 4. Solve it. LCM is x plus 4. So x plus 4 minus x, x cancel, 4 upon x plus 4. Okay, so this is the value of 1 minus y. So y itself x upon x plus 4, and 1 minus y equals to 4 upon x plus 4. So this is our target, and they are in product form. Okay, see, so we have given that y is equal to x upon x plus 4, and we have to prove that x dy by dx. Dy by dx means differentiation of y with respect to x. So differentiation with respect to short form x. So dy by dx is equal to d upon dx x upon x plus 4. Now this is the numerator and this is denominator. Apply formula. Denominator, differentiation of numerator, minus numerator, differentiation of denominator, upon denominator square, that means x plus 4 whole square, dy by dx. So dy by dx is equal to x plus 4, differentiation of x is 1, differentiation of x is 1, minus x, d by dx x plus d by dx 4 upon x plus 4 whole square. So dy by dx is equal to x plus 4 minus x in bracket, differentiation of x is 1 and differentiation of 4 is 0, upon x plus 4 whole square, right? Now dy by dx is equal to x plus 4 as it is, minus plus minus x into 1 x, upon x plus 4 whole square. Now x
cancel. So we have dy by dx is equal to 4 upon x plus 4 whole square. Now we have to prove x dy by dx. So multiply by x both the side. So x dy by dx is equal to 4x upon x plus 4 whole square. So we got left hand side, which is x dy by dx. Now our target is y, 1 minus y. Already we found the value of y and 1 minus y. Y is equal to x upon x plus 4 and 1 minus y is equal to 4 upon x plus 4. So separate them. Y is equal to x upon x plus 4. We can write x plus 4 whole square 2 times. Yes, and 4 upon x plus 4. Right? Now put x upon x plus 4 as y and 4 upon x plus 4 as 1 minus y. So x dy by dx is equal to, this is y and this is 1 minus y. Hence proved. Okay. So these are the questions which are related to product form and division form. Okay. Now we saw in last 2 videos the questions which are related to product and division. Okay. Thank you.